Good morning everyone. Welcome back to accountancy class, and today we are solving the chapter trial balance again. It is question number 7 from your book, chapter trial balance. So today we will be saying what to do when the trial balance does not match. अगर trial balance match नहीं करता है फिर क्या करना है? This is the question, right? So I've already prepared the format of the trial balance, serial number, heads of account, the account headings, okay, ledger folio, the page number of the ledger, debit rupees, credit rupees, right? So the debit balances will be shown in the debit column and the credit balances will be shown in the credit column, right? So see from question number 7, from the following balances extracted from the ledger of Shri Narugopal, prepare trial balance as on 31st March 2009, right? So we'll start with the very first item here, which is capital. Capital has a credit balance. Capital the time the owner give hunda beta. So capital account has a credit balance of rupees 75 lakh. Then the second one is plant. Plant is an asset and will have a debit balance 15 lakh. Next is cash in hand. Cash in hand is an asset and will have a debit balance 2,500. Next is fourth is commission received. Commission received has a debit balance. Commission received has a credit balance, but it is an income and will be shown on the credit side, right? So commission received is an income and all the incomes have a credit balance. Next is discount, debit balance. So if it is discount debit balance, then it must be discount allowed. क्योंकि अगर debit balance है फिर वो expense है, and discount received is an income, discount allowed is an expense. So that is why I am mentioning the word discount allowed here with 55,000. Debit balance means it is allowed because if it has a debit balance, then it is an expense and all the expenses have a debit balance. Okay, so the next thing we have is purchaser's return. So what are purchaser's returns? When the purchased goods are returned by the business. So when we do the purchases, we debit purchases account and the reverse of it will be credited, right? It's a cancellation of an expense basically. या एक कह लो debit what comes in, credit what goes out, the rule भी apply कर सकते हो, ठीक है? So credit what goes out ना कर दो चाहे 50,000. Okay, so it's the purchase goods. Purchases अपना expense सीधा बेटा हम लोग goods return हो गया. So expense की cancellation होती है, इस करके अपन credit कर देते. Next is interest received. The seventh one is interest received. So interest received, as the word received is given, it's an income budget. So if it is an income, it will be shown on the credit side. 30,000. Okay. Next is repairing charges. So repairing charges is an expense and will be having a debit balance, right? So expenses, debit all expenses and losses, all the expenses have a debit balance. So repairing expenses are 1,25,000. Okay, ninth point, general expenses. General expenses are the day-to-day expenses. So general expenses have a debit balance. Expense the debit balance ही होएगा बेटा, will be shown in the debit column, 3 lakh. Okay. Next, 10th we have is wages. Wages being an expense will again have a debit balance. Okay. Next is furniture. Furniture. Furniture being an asset will have a debit balance. 1,20,000. Sales return. So what is sales return? Sales return is that the goods that have been sold to the customer have now been returned back to the business. जो goods बचे तुसी customer ਨੂੰ sale कर चुके हो, customer ने उन्हें goods ਨੂੰ वापस करता है ना? So it is basically cancellation of an income. So sales ਨੂੰ credit करीदा है तो इस करके sales return debit होता है.
90,000. Debit balance. Loans advanced. What are loans advanced? These are the loans given. Loans advanced means that if I am giving you a loan, it means that is a loan advanced. Okay. Now see, if the word loan is mentioned, agar loan kalla word mentioned, only loan word is mentioned, then it means that the loan is taken and that loan is a liability. But when the loans are given, beta, when the loans are advanced, so that is your money and you have given to somebody on a loan, so that becomes your asset. It's your money lying with somebody else, but it's at the end of the day it's your money, so it's an asset. Okay? So loans advanced is an asset. कल्ला लोन वर्ड क्या है, फिर वो लाइबिलिटी है. अगर लोन्स एडवांस किया बेटा फिर वो एसेट है, बिकॉज फिर तुसी लोन देते हो. Okay, next is office salaries. Office salaries is an expense and will be shown on the debit side, 6 lakh and 25,000. Okay, next is building. Move to the other side. Building. Building is an asset and will have a debit balance, 7 lakh and 50,000. Okay. Next is stock on 1st of April. So opening stock, or you can write it as stock on 1st of April itself. 2018 opening stock जिन्हों पर क्या करने हैं 12,50,000 is your asset and will be shown on the debit side. Okay. Then next is cash at bank. Cash at bank is also an asset. It will have a debit balance. Your money, it's your money lying with the bank, but basically it's your money, so it's your asset. Rates, taxes and insurance. So this is an expense, will have a debit balance. $30,000. Then beta discount credit balance. So agar discount credit balance hai, it means it's an income. So it is discount received. Credit balance is a income hai, income is a discount received hai beta. Discount allowed is an expense and does have a debit balance, and discount received is an income and will have a credit balance. Okay. Next, sundry creditors. Sundry creditors में credit balance होता है. $2,50,000. 21st sales. $62,50,000. So sales is an income, will have a credit balance. 22nd. Book debts. Book debts means debtors, right? So the debts which are showing in our books is called book debts. Book debts are debtors, bad debts are the debtors which are irrecoverable. So that is the difference. Book debts means debtors and bad debts means the book debts which have gone irrecoverable. So for debtors we use the word book debts also because these are the debtors mentioned in the books. So that is why they are called book debts also. So debtors have a debit balance. They are an asset. They will have a debit balance 15 lakhs. Okay. 23rd. Rent. Rent is an expense per se. It will have debit balance which is so book debts were 15 lakh. Rent is 62,500. What most of you will get confused. Why haven't we taken it to be rent received? So as we have done in the journal beta, अगर rent paid है, rent account बढ़ता है. अगर rent received है, rent received account बढ़ता है, right? So always keep in mind when there are expenses, we don't use the word paid, but when an income is received, necessary the word received is to be mentioned at the last. For example, अगर commission paid है, you can make commission account, but if commission is received, then you will make commission received account, right? So that is the point here. Okay, purchases, as you know, purchases is an expense will have debit balance 48 lakh. Okay, then 27th
freight. So carriage and freight are expenses. They will have a debit balance 75,000. Okay, 28th, delivery van. Delivery van is an asset. The van we are having is an asset, so it will be having a debit balance 5 lakh. Okay. So next is traveling expenses. Traveling expenses, as the name suggests, is an expense and will have a debit balance 50,000. Okay. And last is drawings. Drawings account hoga banda beta when owner is receiver. So drawings account also has a debit balance. Okay. So all the balances have been shown. You can see I have shown all the balances beta. And I want you to stop the video right here. Look at the balances, and if you have any doubt, please consult your respective teacher. Right? So these are the normal balances. Assets have debit balance, liabilities have credit balance, expenses and losses have debit balance, incomes and gains have credit balance, debtors have debit balance, creditors have credit balance. Right? So this is a very simple question. Okay. Now let's make a total. Let's make a total of both the sides. So on the credit side, the total is 75 lakh. I'll make the calculations and I'll let you know. Okay, so I have made a total of the debit and credit side. The total of credit side is 1 crore 43 lakhs, right? So total of credit side is 1 crore 43 lakhs, and the total of debit side is 1 crore 41 lakh and 10,000. Okay? Debit side 1 lakh, 1 crore 41 lakh and 10,000 is the total. So what here? The debit side and the credit side do not match. The total of debit balances and the total of credit balances do not match. So in that case, what to do? उस केस की कर रहे हैं. तुसी की करोगे बेटा? You put the higher value. Okay? तुसी higher value जो है वो पा दो. Okay? The higher value in this case is 1 crore 43 lakhs, which is the total of credit side. So 1 crore 43 lakhs. So debit side the total will 1 crore 43 lakhs होना चाहिए बेटा. Okay, but the total of debit side is 1 crore 41 lakh 10,000. So debit side is short by 1 lakh and 90,000. So trial balance match नहीं हो पा रहा है सीधा. So this ascertains the arithmetical accuracy of the business. How? Because now by mathematically, arithmetically, the total of the debit balances and the total of credit balances does not match. So it means that there has been an error calculating the ledger balances or putting up an entry in the ledger. यहाँ का ledger balances calculate करने में कोई गलती हुई है बेटा, and यहाँ फिर amount ledger funds कोई गलती हुई है. So there is an error somewhere because the debit and the credit side of the trial balance does not match. ठीक है? कोई ना कोई error है, but this error cannot be ascertained by trial balance. ये पता लग गया कि error है, but ये नहीं पता लगेगा कि की error है, right? So we will have to go back and check our account. अपन वापस जाना पड़ेगा. We have to check our journal ledger all over again, ताकि अपन जो mistake है अपनी वो identify हो जाए. ठीक है? But trial balance के दसेगा कि mistake है. Trial balance is only going to help us to ascertain कि अगर match हो गया है तो अपन ये मान के चलते हैं कि ledgers के balances सही calculate हुए ने mathematically. But अगर match नहीं हो रहा है, so it means mathematically also we wrong somewhere. ठीक है? So there are errors there. Okay? So in that case, the trial balance will have to close trial balance for the meantime. So what we can do is debit side 1,90,000 ना short से की बेटा. अगर debit side 1,90,000 ना short से, and we don't know still what the error is because error find करने तो अपनी books check करनी है पहले. For the meantime we don't know what the error is.
ਸੋ ਅਗਰ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਅਕਾਊਂਟ ਹੇਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ, ਰਾइट, डेबिट साइड घट पै रही है, कोई ना कोई एरर है, बट वी डोंट नो व्हाट दैट एरर इज, सो दैट एरर इज अ सस्पेंस फॉर द टाइम। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਗਲਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਡੈਬਿਟ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀ ਐਰਰ, ਬਟ ਫॉर द मीन टाइम वी डोंट नो व्हाट दैट एरर इज। एरर फाइंड ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, which might take time, so for the mean time ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਸਸਪੈਂਸ ਮੀਨਸ we don't know ਕਿ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, we'll go back, we'll check the books, cancel the suspense account, right, and then we'll proceed forward. So cancellation of suspense account and how to identify an error is basically in the chapter rectification of errors, right? So in this chapter we'll stop here by maintaining the suspense account on the side which is short. अगर credit side shorter होंगे तो credit side suspense पा देंगे, debit side shorter and put the suspense on the debit side. Okay, so this is how we identify कि किस side error हुआ है. So probably here the error is on the debit side, maybe कोई debit balance गलत calculate हुआ है, or we forgot to put up an entry on the debit side of any of the ledgers. Okay, so for the meantime we make a suspense account, we'll show the balance on the side which is shorter and we'll close the trial balance. Okay, so this is how, this is question number 7, this is how we were required to do. Okay, so I like to mention a very quick point here, that when the trial balance does not match, अगर थोड़ा trial balance match नहीं करता है, first look for obvious accounts. Obvious accounts होंगे ने कि अगर debit side value missing है, first check with cash missing हो सकता है बेटा, then debtors can be missing, right, and then you can write sorry, first cash and then check for debtors, right? So cash भी हैगा सीगा, debtors भी हैगा सीगा, so we wrote suspense account. पहला obvious account check करें कि कोई obvious account तो नहीं missing, ठीक है? On the credit side you must check for capital and creditors, क्योंकि कोई business बिना capital तो बिना creditors तो नहीं होएगा. सो अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट पै रही है तो उन्होंने पहले चेक करो कि कैपिटल है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सीखा बेटा, ठीक है, चेक क्रेडिटर्स है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्रेडिटर्स भी सीखे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों तो बिना बिजनेस, कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल या बिना क्रेडिटर्स तो नहीं होता. दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स, राइट. सो फर्स्ट चेक फॉर ऑब्वियस अकाउंट्स. तो ऑब्वियस अकाउंट्स फॉर डेबिट साइड कैन बी कैश एंड डेटर्स, and for credit side they can be capital and creditors. Okay, so here all the accounts were there. Basically जो NA accounts mentioned हों बेटा, there were 30 ledger accounts here. So 30 ledger accounts में you can always go for suspense because कुछ maximum accounts होते होंगे, but always look for capital. Capital कदे किसी फॉर्म में missing होना चाहिए. बाई चांस क्रेडिट साइड शॉर्ट होंगी ना, मैं चेक कर रहा था कि कैपिटल है, अगर कैपिटल है, क्रेडिटर्स है तो फिर मैं पढ़ा सी सस्पेंस, राइट. सो हियर द अमाउंट वाज शॉर्ट ऑन द डेबिट साइड, पहला मैं चेक किया कैश है, उसके बाद मैं चेक किया डेटर्स है, डेटर्स दोनों ही है तो फिर सस्पेंस अकाउंट. सो फर्स्ट चेक फॉर ऑब्वियस अकाउंट एंड देन गो फॉर सस्पेंस अकाउंट. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी विल मूव ahead to question number 12. Please stop the video here, check, right, write down these balances, and then we'll move forward to question number 7. Okay, so yesterday question number 8 and 9 were your homework. Today question number 10th and 11th will be your homework. So I am solving question number 12. So in question number 12 you can see the very first item is cost of goods sold. So when there is cost of goods sold given in the question, the treatment slightly changes. How does it change? See, when you see the formula of cost of goods sold, what is cost of goods sold? It is the cost of the goods which have been sold. ठीक है, जो goods सेल की है ने उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रहे हैं. So if I am selling you this marker for rupees, let's say 15, right? So the sales price is 15 rupees. जो इस मार्कर में सेल किया है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैनू आई है, that is my cost of goods sold. So the formula of cost of goods sold you have done in the chapter accounting terms.
I'll just repeat the formula once. Opening stock on the very first day of the year. Then net purchases is purchases minus purchases return. Okay. Then direct expenses. What are direct expenses? Direct expenses are the expenses directly related to manufacturing. Expenses directly related to manufacturing या एक कह लो directly related to factory area. वो expenses जो manufacturing ना directly related ने, ठीक है, या एक कह लो कि factory area दे ना directly related. Okay, so these expenses are called direct expenses. This is again something that you've done in the accounting terms. So direct expenses दे बेटा बच्चों को कुछ examples देनी है. What are direct expenses? Direct expenses are the expenses which are incurred in the factory area of the business या जो expenses सीधे सीधे manufacturing ना concern ने उन्हें हम अपन direct expenses कहते हैं. ठीक है? So सब तो पहला wages is a direct expense. Now I write the indirect opposite indirect expenses of all that also. ठीक है, ताकि तुम कदे confusion ना होए. So wages किनो pay होंदियां ने बेटा? Labor को. Wages is a direct expense. वेजेस लेबर ਨੂੰ पे ਕਰਦੇ ਆ जो लेबर ਨੂੰ पे चीज ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ डायरेक्ट एक्सपेंस है. सो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज सैलरी. क्योंकि सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि वो एम्प्लॉइज ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है जो ऑफिस एरिया 'ਚ काम करते हैं. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ यू वांट टू क्लासिफाई देम फर्दर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स. ईदर दे आर सेलिंग एक्सपेंसेस और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ना रिलेटेड होंगे तो या वो सेलिंग ना रिलेटेड होंगे. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ईदर सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स ना रिलेटेड होंगे ने या फिर बेटा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ना रिलेटेड होंगे. जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ना रिलेटेड ने दीज आर कॉल्ड योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ना रिलेटेड ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एरिया ना रिलेटेड ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो वेजेस बच्चे लेबर ਨੂੰ पे ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. लेबर फैक्ट्री 'ਚ काम करती है, राइट. डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ना कंसर्न होंदी है. सो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. whereas salaries is an indirect expense. salaries employees ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. employees office 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. indirect expense, right. Similarly, we can take some more examples here. Carriage. So there are two types of carriage. Carriage inward and carriage outward. ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੈਰੇਜ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਰੇਜ ਇਨਵਰਡ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੈਰੇਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਰੇਜ ਆਊਟਵਰਡ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, in this particular criteria, carriage inward is when you're bringing the raw material, semi manufactured goods or manufactured goods into the factory area or into the godown area. That is your carriage inward, right. So carriage inward beta directly manufacturing ना related है. This is your direct expense. Whereas carriage outward is paid because you need to send the goods to the customer's place. Customer ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ carriage ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ carriage outward ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So carriage outward beta selling expense है. Sales ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ carriage outward pay ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ because that is an additional service you are providing to your customer. So carriage outward is a indirect expense. अगर कुछ नहीं दिखता ना कि कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है तो उन्होंने इनवर्ड लिया जाता है. लेट्स से ओनली द वर्ड कैरेज इज गिवन. ना तो हम दिखता है कि कैरेज इनवर्ड है ना तो हम दिखता है कि कैरेज आउटवर्ड है तो हम कैरेज इनवर्ड मान के चलते हैं. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज फ्यूल पावर एंड एनर्जी. सो बिजनेस जो बेटा मैन्युफैक्चरिंग करता है दे नीड फ्यूल or some kind of power, right, and energy, right. So when it is said fuel, power and energy, it is the fuel, power and energy used to run the machines. machines ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ fuel use ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, power use ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, energy use ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that comes in fuel, power and energy, right. whereas when they say electricity expenses, ਜਦੋਂ question ਚ electricity expenses क्या ਹੋਏ ਬੇਟਾ? electricity expenses relates to the electricity expenses of the office area. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, right. There can be some of the machines working on electricity, some of them can be working on petrol or diesel or any other sources of power. So
फ्यूल पावर एंड एनर्जी क्या है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है बिकॉज देन इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री एरिया। एंड अगर बचे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या है, फिर वो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, देन इट बिकम्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली इफ द वर्ड फैक्ट्री रेंट इज गिवन, फैक्ट्री रेंट मीन्स फैक्ट्री का रेंट, जो फैक्ट्री जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका रेंट। सो फैक्ट्रीज इन आर रिलेटेड एक्सपेंस है डायरेक्टली, इट इज नाम ची फैक्ट्री है बेटा, सो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट्री एरिया, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। Whereas अगर कला वर्ड रेंट मेंशन, if only the word rent is given, अगर कला रेंट वर्ड मेंशनड है बेटा, फिर वो रेंट ਤੁਹਾਡੇ ऑफिस ਦੀ बिल्डिंग ਦਾ है, then it is an indirect expense. Okay, so you have to identify various direct expenses. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ कि अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, you will have to identify it like this. Okay, so let's come to next, minus closing stock. So this is the formula bit, this is the formula here. Cost of goods sold, the formula है opening stock, साल दे पहले दिन का stock at on the 1st of April of beginning of the year, plus net purchases minus purchases return, plus direct expenses. Direct expenses are the expenses related to the factory area, minus closing stock. So closing stock is the stock that is the stock that is lying in the business at the end of the year, that is the closing stock. So ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ cost of goods sold ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ कि फिर opening stock, net purchases से direct expenses which बचे already included है। अगर cost of goods sold ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है, it means opening stock, net purchases and direct expenses cost of goods sold ਦੇ ਵਿੱਚ included ਨੇ, क्योंकि वो add ਹੋਏ कि cost of goods sold बने, right? So अगर बचे ਤੁਹਾਨੂੰ questions cost of goods sold ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, it means it includes opening stock, it includes net purchases, it includes direct expenses, but it does not include closing stock. Closing stock कुछ included नहीं। So अगर cost of goods sold देता है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ अलग तो शो नहीं करोगे, opening stock अलग तो शो नहीं होएगा, net purchases अलग तो शो नहीं होएगा, direct expenses अलग तो शो नहीं होएगा, because वो cost of goods sold ਦੇ ਵਿੱਚ included है। Whereas closing stock will be shown, फिर closing stock जरूर show करांगे, because closing stock cost of goods sold ਦੇ ਵਿੱਚ included नहीं, ठीक है? So this is the point I was telling you. Question number 12. Prepare correct trial balance from the following trial balance which in which there are certain mistakes. So we are drafting a new trial balance. Okay, so now we have to don't know the date, so we will not put the date and we put a blank here. Format proper banana, date दिखती है, you put on the date. If the date is not given, you don't put on the date. Okay. Okay. So cost of goods sold. Serial number 1. Cost of goods sold. 1,50,000. Okay, so cost of goods sold ਦੇ ਵਿੱਚ closing stock included नहीं है बेटा, excluded है, इसको अलग तो show करांगे। So closing stock show होएगा, closing stock बचे उधर ही show होता है अगर cost of goods sold होए। I'll explain it how to solve when cost of goods sold is not given, we'll come to that later। 40,000. Then debtors will be having a debit balance 60,000. Next is creditors. Creditors will be having a credit balance 30,000. Next is beta fixed assets. Fixed assets will be having a debit balance 50,000. Next is opening stock. Opening stock हम show करांगे नहीं करांगे, why? Because opening stock is already included in cost of goods sold. तो अगर cost of goods sold show करता है बेटा, opening stock ਉਹਦੇ अंदर included है, so already adjust हो गया cost of goods sold ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ अलग तो show ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, right? So opening stock हम show नहीं करांगे। Next is expenses. Expenses, color expenses, so don't take them to be direct expenses. When only the word expenses is given, it means general expenses, and general expenses is an indirect expense.
जनरल एक्सपेंसिस डे टू डे एक्सपेंसिस भी ऑफिस च होंगे ने, ये ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, डायरेक्ट नहीं होंगे, राइट। सो अगर कला वर्ड एक्सपेंसिस देता है, इट मीन्स जनरल एक्सपेंसिस, एंड जनरल एक्सपेंसिस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डे टू डे रूटीन एक्सपेंसिस ऑफ द ऑफिस, राइट। So expenses will be taken to be general expenses and will have a debit balance. Okay, then next is sales. Sales is generating revenue. A income बनाती है, so credit balance. Capital. Capital is better 90,000. Capital will have a credit balance. Okay, so 1,50,000 cost of goods sold, 40,000 closing stock asset, 60,000 debtors asset, 30,000 creditors liability credit balance. Okay, fixed assets 50,000 assets debit balance. Opening stock will not be shown because it is already included in cost of goods sold. So जो cost of goods sold दिखता है, opening purchases, opening stock नहीं show होएगा, purchases अलग तो नहीं show होएगा, direct expenses अलग तो show नहीं होएगा, कल क्लोजिंग स्टॉक शो करोगे बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूडेड नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ਦਿੱਤੇ ਨੇ बेटा जनरल एक्सपेंसेस ने, जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ਦਾ शो होएगा। sales is a revenue generating income, so sales will have a credit balance, capital credit balance, right? So let's make a total here on both the sides. If the trial balance matches, it means that there is no error, at least in the calculations. अगर trial balance नहीं match करता फिर पक्का error है calculations में, right? So in this case, you have to always keep in mind that you have to make a correct format. If your format is not up to the mark, then it is, you will lose the marks on the format. Okay. So one closure of the summary of the trial balance and also नीचे एक line. So there has to be double line here. So we write total here, right? So the total in this case becomes, on the credit side it becomes 3,20,000. Okay. Then on the debit side it becomes 150 plus 40, 190, 250, 3,20,000. Yes. So the total matches on both the sides. So at least इतो इन्ना पता लग जाएगा कि at least जिन्ने accounts बने ने उन्होंने कोई arithmetical inaccuracy नहीं है, arithmetically mathematically correction calculations से जुड़ी हो सही हो जाए, right? So this is the end of the chapter. Okay. So now I am going to tell you certain things. I am going to tell you certain things which is not given in the book but may come in the question of trial balance. So there are things like that. Why is closing stock shown when there is cost of goods sold is not given, when there is opening stock, purchases and your direct expenses separately? So in that case, try to understand a few concepts which is not there in your book, in the chapter, but yes, they relate to trial balance. So see, in this case बेटा, अगर तुम्हें opening stock अलग तो शो कर रहे हो and purchases अलग तो शो कर रहे हो, direct expenses अलग तो शो कर रहे हो, मतलब cost of goods sold questions given नहीं है। अगर cost of goods sold is not given in the question, I mentioned the formula of cost of goods sold also. Cost of goods sold is equal to opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. So अगर cost of goods sold questions given है बेटा, फिर तुसी opening stock अलग तो show नहीं करते हो, net purchases अलग तो show नहीं करते हो, direct expenses अलग तो show नहीं करते हो, but closing stock show होएगा because वो included नहीं है।
बट व्हाट इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिता हो तो ओपनिंग स्टॉक अलग तो शो होएगा, नेट परचेजेस अलग तो शो होएगा, नेट परचेजेस यू कैन से परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न इज कॉल्ड नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग तो शो होएगा, बट फिर क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होएगा। क्लोजिंग स्टॉक शो क्यों नहीं होएगा बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। कुछ साल से स्टार्टिंग से स्टॉक पे आते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। कुछ बचे आपको परचेजेस कर लिए, परचेजेस लेस रिटर्न, so I can write the word net purchases here, ठीक है, and direct expenses they are shown if there is no cost of goods sold. If cost of goods sold is there, they will not be shown, but let's forget the direct expenses for the meantime, इधर कोई relation नहीं है, right? So अगर opening stock and net purchases बचे तो अलग तो शो कर रहे, opening stock अलग तो शो हो रहा है, net purchases अलग तो शो हो रहा है, cost of goods sold क्वेश्चन गिवन नहीं थे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक अलग तो शो होएगा, नेट परचेजेस अलग तो शो होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग तो शो होंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होएगा। ਉਹਦਾ रीजन बड़ा सिंपल है कि कुछ स्टॉक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ईयर बिगनिंग से ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, देयर वाज सम स्टॉक लाइंग विद यू एट द ईयर बिगनिंग, कुछ ਤੁਸੀਂ परचेज कर लिया, ठीक है, सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ यू हैड सर्टेन स्टॉक इन हैंड, कुछ स्टॉक ईयर द बिगनिंग से पिया सीगा, कुछ तुसी परचेज कर लिया, सो ईयर द बिगनिंग वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एंड जो तुसी परचेज कर लिया परचेजेस, ओके। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो गुड्स सेल हो गया विल बी रेफर टू एज सेल्स, एंड जो सेल्स नहीं होईया दे विल बी रेफर टू एज क्लोजिंग स्टॉक, जो सेल नहीं होया ਉਹਨੂੰ क्लोजिंग स्टॉक कह दो, ठीक है। So closing stock is basically a part of opening stock plus purchases. कुछ ओपनिंग स्टॉक से साल दे बिगनिंग से, कुछ परचेजेस आपा कर लिया बेटा ड्यूरिंग द ईयर, ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ दैट इज रेफर टू एज सेल्स, एंड जो सेल नहीं होईਆਂ दे रेफर टू एज क्लोजिंग स्टॉक, जो ईयर एंड ते स्टॉक बच गया। सो अगर तुसी ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, नेट परचेजेस रिकॉर्ड कर लिया ने, तो ओपनिंग स्टॉक ਤੇ नेट परचेजेस ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ठीक है, जो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ क्लोजिंग स्टॉक है। सो क्लोजिंग स्टॉक इज बेसिकली द स्टॉक लेफ्ट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस व्हिच इज नॉट सोल्ड। सो क्लोजिंग स्टॉक बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ਦਾ ਹੀ ਪਾर्ट है, ठीक है। सो अगर तुसी ओपनिंग स्टॉक अलग तो शो कर रहे हो, परचेजेस अलग तो शो कर रहे हो, तो क्लोजिंग स्टॉक शो करने की लोड़ नहीं है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से परचेजेस का ही पार्ट है, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से परचेजेस जो स्टॉक सेल नहीं होया जो बच गया दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सो जो क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड ते बचे है बेटा, ईदर इट इज अ पार्ट ऑफ योर ओपनिंग स्टॉक और योर परचेजेस जो सेल नहीं होया, okay। So closing stock is not shown if opening stock and purchases are shown separately, ठीक है। So when cost of goods sold is not given, opening stock, net purchases and direct expenses will not be shown, sorry, will be shown separately। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिखता क्वेश्चन, तो ओपनिंग स्टॉक अलग तो शो करोगे, नेट परचेजेस अलग तो शो करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग तो शो करोगे, विल बी शोन सेपरेटली, बट क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन, बट क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होएगा, विल नॉट बी शोन, बिकॉज closing stock is a part of opening stock plus purchases which is not sold, okay, which is not sold, जो सेल नहीं हो पाया, okay। सो ओपनिंग स्टॉक ते परचेजेस का ही पार्ट है क्लोजिंग स्टॉक, सो अगर वो शो हो गए तो क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली शो करने की लोड़ नहीं है। बट सेकेंडली इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन देता हुआ है, फिर देन ओपनिंग स्टॉक
net purchases and direct expenses will not be shown separately as they are included in cost of goods sold. एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इंक्लूडेड नहीं, इस करके इन्होंने सेपरेटली शो नहीं करोगे, ठीक है। बट इन दिस केस क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन बिकॉज इट हैज बीन एक्सक्लूडेड, क्योंकि वो माइनस हो गया। अगर माइनस हो गया तो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो इस करके इन्हों सेपरेटली शो करना पड़ेगा। तो अगर ए वाला केस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिता हुआ है बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक ਵਿੱਚੋਂ माइनस होया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होया हुआ है मतलब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इंक्लूडेड नहीं है क्लोजिंग स्टॉक तो फिर उन्हें अलग तो शो करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो माइनस हो रखे, सो यू नीड टू शो इट सेपरेटली ना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट केस इज व्हेन एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन इन द क्वेश्चन। When adjusted purchases are given, the formula for this is case 2. This is again not in your book, so please write it down and I'll send you certain questions to practice as an assignment. Please practice those, right? So when adjusted purchases is given in the question, the formula for adjusted purchases is opening stock plus net purchases minus closing stock. So adjusted purchases the formula है बेटा opening stock plus net purchases minus closing stock, that is called adjusted purchases, right? So adjusted purchases से cost of goods sold कितना फर्क है? Only direct expense. Basically cost of goods sold is adjusted purchases plus direct expenses, right? So these formulas can also come for you 1 mark calculations, so please keep that in mind. तो अगर adjusted purchases शो क्वेश्चन है बेटा, if adjusted purchases is given in the question, if adjusted purchases is given in the question, अगर adjusted purchases क्वेश्चन given है बच्चे, तब फिर तुसी ये देखो कि adjusted purchases रिकॉर्ड होएगा, अगर दिस सही होएगा adjusted purchases रिकॉर्ड करोगे, adjusted purchases will be shown in trial balance, adjusted purchases ਨੂੰ show ਕਰਾਂਗੇ बेटा trial balance ਦੇ ਵਿੱਚ, but opening stock is already included है, writing here, but then opening stock, net purchases are already included, ठीक है। फिर अलग तो शो नहीं होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक अगर एडजस्टेड परचेजेस शो हो गया बेटा, ओपनिंग स्टॉक उसके अंदर इंक्लूडेड है, अलग तो शो नहीं होएगा। नेट परचेजेस उसके अंदर इंक्लूडेड है, अलग तो शो नहीं होएगा, ठीक है। So opening stock and net purchases are already included in adjusted purchases. ये adjusted purchases already included हैं, ठीक है, are already included in adjusted purchases, so they will not be shown separately. फिर इन्होंने separately show नहीं करा, then they will not be shown separately. but अगर adjusted purchases क्वेश्चन गिवन नहीं है, वो सेम ही केस हो जाएगा अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या adjusted purchases क्वेश्चन नहीं देते हो, तो फिर आप ओपनिंग स्टॉक अलग तो शो कराएंगे, नेट परचेजेस अलग तो शो कराएंगे, राइट। अगर adjusted purchases क्वेश्चन गिवन नहीं है बेटा, फिर ओपनिंग स्टॉक अलग तो शो होएगा, adjusted purchases अलग तो शो होएगा, बट फिर क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होएगा।
बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेजेस अगर शो नहीं हो रहा तो क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से परचेजेस का ही पार्ट है जो सेल नहीं होया। सो अगर ओपनिंग स्टॉक अलग तो शो हो गया, नेट परचेजेस अलग तो शो हो गए ने, फिर तुसी क्लोजिंग स्टॉक ਨੂੰ शो नहीं करना, right? So let's sum this up. Closing stock will only be shown, closing stock ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ अगर ਤੁਸੀਂ cost of goods sold ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ adjusted purchases ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ trial balance ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस पढ़ा रहे हो एंड ਤੁਸੀਂ cost of goods sold ਤੇ adjusted purchases ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ बेटा, फिर ਤੁਸੀਂ closing stock ही शो करोगे बिकॉज closing stock फिर excluded होएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? फिर ਤੁਸੀਂ closing stock शो करोगे। बट अगर क्वेश्चन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है ना ना एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, फिर तुसी ओपनिंग स्टॉक अलग तो शो होएगा, परचेजेस अलग तो शो होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग तो शो होंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो होएगा बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस विच इज नॉट सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक ते परचेजेस का ही पार्ट है जो सेल नहीं होया। तो अगर ओपनिंग स्टॉक परचेजेस अलग अलग शो हो गए ने तो उन्होंने भी पार्ट है, इस करके फिर वो सेपरेटली शो नहीं करोगे, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक। प्लीज पॉज द वीडियो हियर, यू कैन राइट दिस डाउन, okay? And one little aspect, another there's one more thing which comes in the question normally of trial balance is called apprentice premium. Apprentice premium की है बेटा, apprenticeship programs की होंगे ने where the businesses they hire people for training them, ठीक है? So मान लो that let's say I am an MBA post graduate, so मैनू लगता है कि मैनू पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए है। with every professional program there is a training, right? So मैं एक जगह ट्रेनिंग लैंड ले गई एंड आई टोल्ड देम दैट आई एम गोइंग टू पे यू फॉर प्रोवाइडिंग मी ट्रेनिंग, ठीक है? सो बिजनेस बेटा ट्रेनिंग्स ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ट्रेनिंग ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ कुछ फीस चार्ज करता है, ਉਹਨੂੰ अप्रेंटिस प्रीमियम ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ठीक है? You must have seen apprentices with a lot of hands-on job like plumbers, electricians, right? इन्हां दे नाल there's a person who's training under them, तो वो पर्सन उन्होंने ट्रेनिंग लैन के लिए कई बार कुछ पैसे देंगे ने कि सानू ट्रेनिंग दे दो, विल पे यू फॉर डूइंग दैट, ठीक है? सॉरी, सो इन दैट केस जो बिजनेस बेटा इन्हें ट्रेनिंग्स तो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्होंने तो फीस चार्ज कर दी है, दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिस प्रीमियम एंड हैंस अप्रेंटिस प्रीमियम इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, राइट? सो अगर तुम कभी क्वेश्चन अप्रेंटिस प्रीमियम मिले उन्होंने इनकम लाओगे, ओके? So these are certain things which were not given in your book. I have given you as additional notes. So please go through them once. If you have any doubt, we'll take these doubts in the doubt session. Note these down for theoretical purposes and start practicing more of questions of trial balance that we'll be sending you, right? Another important information today is that by tomorrow you will have to get the new books for T.S. Garewal because a pattern for sales and purchases has slightly changed, right? So we'll be teaching that tomorrow, provided each one of you has the new books. If anybody is unable to fetch the new book, please ask us for a PDF to that. We'll scan the book, we'll scan the new book and we'll send you, okay? But by tomorrow either you should have the new book or the scanned copy of the new book. But eventually scanned copy is not the option, तो नवी बुक लैनी पड़ेगी बिकॉज वो चेंजेस में सारे चैप्टर्स आएंगे इंक्लूडिंग योर कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स, राइट? सो वो चेंजेस इन्ना चैप्टर्स ऑन करके द इंटायर 3 or 4 चैप्टर्स दी कैलकुलेशन जी चेंज हुई, ओके? So we have taught you purchases and sales transactions of the journal as per the previous criteria which has slightly changed, right? So we'll be teaching you that tomorrow. So for that either you should have the new book or a PDF of the new book, ठीक है? But eventually तो नवी book लेनी पड़ेगी because अगले chapters are totally dependent upon the new criteria, okay? So please keep that in mind, and in case you have facing any issues, please consult your respective subject teacher and note these down as a part of the extra notes for trial balance. I'll also be sending a picture of these. Please
write them down, understand them. In case you have a doubt, we'll talk about it. This is not mentioned in your book, so we're giving you this as additional notes, and we'll be sending you an assignment also today, which you have to complete it by tomorrow. Okay, so this is it for today. Thank you so much.